Hello, welcome to this new tutorial. Today we are going to talk about the last major school of political theory, that is contemporary political theory. आप सबका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में। आज हम लास्ट पार्ट को कवर करेंगे जो कि मेजर स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थियरी का है और वो है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी। सो चलिए शुरू करते हैं। सो सिंस 1970s, there has been revival of interest in political theories in US, Europe and other parts of the world. Well, passing away of the shadow of World War II, re-emergence of Europe and crisis in the ideologies of socialism and Marxism has brought about a new elegance or grace in political ideologies. As a result of a great debate, a number of important innovation in the study of political theory followed, which culminated into a broad understanding of contemporary political theory. जब हम contemporary political theory की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो मूवमेंट है to understand contemporary political theory, it's all started with 1970s. 1970s में there was a revival of interest in political theory, especially US में हुआ, यूरोप में हुआ और बहुत से अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हुआ। और इसके अलावा दूसरे महायुद्ध के बाद there was a re-emergence of Europe after Second World War. Europe became the total focus of development of ideas, development of institutions. So re-emergence of Europe, and later on there was a crisis in the ideology of socialism and Marxism. मतलब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद री एमर्जेंस ऑफ यूरोप के बाद एक आइडियोलॉजिकल क्राइसिस को देखा गया और ये आइडियोलॉजिकल क्राइसिस ज़्यादातर सोशलिज्म और मार्क्सिज्म के बीच में रहा और इसी क्राइसिस के वजह से पॉलिटिकल थियरी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को एक नया मुकाम मिल गया, एक नई अंडरस्टैंडिंग मिल गई। और इसी के डिबेट के वजह से द डिबेट बिटवीन सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म, लॉट ऑफ नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट स्टडीज वे कैरिड आउट विद इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल थियरी एंड बहुत से स्टडीज़ के वजह से पॉलिटिकल थियरी को एक इम्पॉर्टेंस दिया गया और बहुत से इनोवेटिव आइडियाज़ पॉलिटिकल थियरीज के दौरान देखे गए। And because of this broad understanding of socialism, Marxism, debate between Marxism and socialism, this eventually culminated. इसकी वजह से एक नई understanding को देखा गया and this new understanding was called contemporary political theory. So in short, because of the debate among the socialism and Marxism after the Second World War, and especially after re-emergence of Europe, there was a great debate and a number of new important innovative studies were brought into the limelight, and thus eventually this led to the culmination of a broad understanding of political theory. So Second World War के बाद, re-emergence of Europe के बाद जब political crisis हो गई शुरू, जब आइडियोलॉजिकल क्राइसिस शुरू हो गई बिटवीन सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म, दिस इवेंचुअली बॉट इनटू अ ग्रेट डिबेट एंड दिस लेड टू अ कल्मिनेशन इनटू अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी। सो इस तरह से कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी को सोसाइटी में और एकेडमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया एंड देयरफॉर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज 1970s onwards wherein the revival of political theory was started, first in Europe, then US and eventually to the entire world. And therefore today we are going to talk about what exactly this contemporary political theory talks about. So therefore, to understand what exactly the contemporary political theory talks about, we need to understand a very important observation given by David. So according to David, contemporary political theory involves 4 distinct tasks.
The first one is it is philosophical in nature, that is, it is concerned with the normative and conceptual framework. Next, empirical. It is empirical, that is, it is concerned with the problem of understanding and explanation of the concept. Third, it is historical, that is, it is concerned with the examination of the key concept of political theory in historical context. And last, finally, it is strategic, that is, it is concerned with an assessment of the feasibility of moving from where we are to where we might likely to be. So in short, when we talk about contemporary political theory, according to David, it is nothing but culmination of all these philosophies, all these theories, and trying to understand the contemporary nature of our society. It is therefore philosophical in nature, it is also empirical, it is also historical, as well as it is strategic. So जब हम कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी की बात करते हैं, तब हमें ये भी समझना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू डेविड, अकॉर्डिंग टू हिम, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी इन्वॉल्व्स 4 टास्क. जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी है उसके 4 टास्क होते हैं. एक फिलोसॉफिकल इन नेचर होता है कि जो इश्यूज़ है इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी उसको फिलोसॉफिकल नेचर से भी देखा जाए, उसको नॉर्मेटिव तरीके से भी देखा जाए, उसको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में भी देखना बहुत ज़रूरी है. उसके अलावा उसको साइंटिफिकली भी देखना बहुत ज़रूरी है, उसको एम्पिरिकल स्टडीज़ से भी देखना बहुत ज़रूरी है. जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उसका इश्यूज़ है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है थ्रू एम्पिरिकल स्टडीज़. एंड देयरफॉर इट हैज़ टू बी सीन फ्रॉम एम्पिरिकल पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड टू गिव एक्सप्लेनेशन टू द कॉन्सेप्ट. मतलब जो भी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी है, जो भी इश्यूज़ है सोसाइटी में या स्टेट में, उसको एम्पिरिकल स्टडीज़ के थ्रू उस प्रॉब्लम को समझना चाहिए और उसको साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन देना चाहिए. इसके अलावा कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी ऑल्सो टॉक्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इश्यूज ऑफ द सोसाइटी थ्रू हिस्टोरिकल कंसर्न. मतलब उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी देखना बहुत ज़रूरी है. एंड उसी की वजह से यू हैव टू कम अप विद एन एक्सप्लेनेशन. उसके जो की कॉन्सेप्ट हैं वो समझना चाहिए, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल इवेंट हैज़ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. इसीलिए हमें हर एक पॉलिटिकल इवेंट को हिस्टोरिकली कॉन्टेक्स्ट के थ्रू भी देखना चाहिए. एग्जाम्पल, यू कैनॉट अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी, यू कैनॉट अंडरस्टैंड स्टेट, or you cannot understand modern democracy until unless you go back to the origin of the state and then try and find out what are the issues and what are the problems are today there in contemporary society. And therefore the last very important point comes is strategic concern. So strategic concern may basically you have to do the assessment and the feasibility of the political theory and the political issues. And this last point, strategic concern, basically talks about where we are and where we might likely to be. मतलब जब हम कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ की बात करते हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं सोसाइटी में, कि हम कहाँ हैं और ये प्रॉब्लम के थ्रू हमें कहाँ जाना है. If you want to build a better society, if you want to solve problem, then we have to start from where we are. And eventually after solving the issues of the state, it might take us to a different level. So in short, according to David, contemporary political theory basically involves these 4 different tasks: philosophy, empirical, historical and strategic. So in short, अगर मैं summarize कर दूँ, then contemporary political theory began in 1970s. First, the interest began in US, Europe and then to the world. And obviously it has the impact of First, Second World War. There was a re-emergence of Europe. There was a crisis in ideology, especially between socialism and Marxism. And this crisis between the ideologies led to a great debate. And this great debate eventually focused more on importance of innovations. And this led to a culmination into a broader understanding of contemporary political theory. And in short, what is contemporary political theory? It's all about looking at the issues of the society and a state through philosophical in nature, through empirical studies, through historical context, and last, strategic concern. So this is all about understanding
contemporary political theory. So I hope you have all understood the major schools of political theories which I have covered in last 5 different tutorials. So see you soon in next tutorial. Till then, take care.